Assalamu alaikum everyone. We are back with our ninth episode of Sir Syed University of Engineering and Technology with information session for the admission 2021. Thank you for joining us. I am Arham Iftikhar Khan, final year student of BBA program in Sir Syed of University. As you all know, Sir Syed University already announced their fall admission are open for all undergraduates and postgraduates program in the Faculty of Civil Engineering, Architecture, Electrical, Computer Engineering and Business Management. As we are receiving queries regarding admission process, eligibility criteria, fee structure, degree program, and scholarship program that we are offering. So we are here today to journal queries along with our academic leader to help you in decision-making process. Let me introduce to our panelists. We have Engineer Muhammad Noman Ali Khan, Director Center for Continuing Professional Education, CCPE, and Assistant Professor ED in Sir Syed University of Engineering and Technology. He did his bachelor and master's both in computer engineering from Sir Syed University. He was lecturer in Sakkar IBA 2000 till 2004. And currently he is director of CCPE, the Center for Continuing Professional Education, and assistant professor of SED in Sir Syed University. And we have Syed Ziaul Yaqeen, Deputy Registrar of Scholarship Department in Sir Syed University of Engineering and Technology. He did his master in marketing and currently deputy registrar of scholarship properly. After his joining us, he properly processed for scholarship department and then he approved for the board of government. At the moment, they giving worth of 30 million students at scholarship. First, my question is for Engineer Muhammad Noman Ali Khan, Director CCPE, the Center for Continuing Professional Education and Assistant Professor SED in Sir Syed University of Engineering and Technology. Assalamu alaikum, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaikum Assalam. I hope, sir, you are doing great. Yes, thank you very much. Hopefully all of you are doing great. Ji, sir. Alhamdulillah. Sir, my first question is for you. Sir, kindly introduce yourself and your program that you are offering. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, as Arama already mentioned that I am a part of the alumni of Sir Syed University. I have done my bachelor's in 96 batch, that is the third batch of Sir Syed University, and completed my bachelor's in 2000. Before completion, I got the job in software house and I worked with the software house as a developer. At the end of 1999, I joined the software house, and with the academics, I pursued that career also of development side. On completion, at that time, there is a boom in IT sector in computer engineering. A lot of projects are available online from the international market, and we are working on them. Globally, there are partners in US and UK, and we are getting the outsourced projects in Pakistan, and we are working at that time. After that completion of my bachelor's, I start working as an academician also in PM Degree College, Faisal. I taught for 1 year, and then I joined IBA Sakkar. And IBA Sakkar, I remained there for almost 4 years as a lecturer and then a management committee member of the institute, and worked there as in charge of labs for the particular 3 years period for the network establishment and lab postings. On the academician side, I also work as a final year project committee member and then become in charge. Currently also working as final year project committee in charge of software engineering department and assistant professor of software engineering department. Additionally, after completion of my master's from the Sir Syed University, I got the add-on responsibility of various management sites. I also manage the examination as a head invigilator of Sir Syed University, and I work as director of continuing professional education. Since 2019, I got this responsibility from the management, and I am very grateful to the management that they select me for this responsible job. Actually, the department of Center of Continuing Professional Education starts with the name of CEP, Continuing Education Program. This program is initiated by the university in 1997 in collaboration with government in Operation Badr. They launched the first program in collaboration with the central government for the Java programming language. And in that program, almost 5,000 participants participated, and they have completed their programming skills development, because at that time the requirement of the market regarding the Java developer is on a very peak, and there is no developer available in the local market. So Sir Syed fulfilled that gap which is present in the academia and industry,
and provide the skill set of the demand in terms of the market. And at that time, a majority of the candidates who done their Java certification are pass out from the continuing education program of Sir Syed University. Instead of that program and calibrations, CEP launched various separate short courses, trainings, skill development programs, in which some of them are directly targeting the market of fresh graduates, and alumni also take those skill sets and get the opportunities in the market, in the local market, as well as as a freelancer in the international market. They are getting those skill sets which are not covered in any university locally and in demand internationally and globally. So for that, we also arrange various online trainings, and currently in the pandemic, we are mostly offering blended mode of operations, physical as well as online. So most of the courses which are going on in terms of continuing education programs related to our short courses, diploma, nano diploma, postgraduate diploma, and the different type of trainings which are in collaboration with the government also, like Kamyab Jawan program, which is also working under the continuing Center of Continuing Professional Education of Sir Syed University, and it is giving the edge to the youngster of the Pakistan, and especially for the middle class of Karachi, that they are getting those skill sets which are highly in demand. And those courses or trainings are very highly paid training, which are offered through CEP and Sir Syed University as a free of cost, as an initiative of Prime Minister of Pakistan. So CEP is not just giving in collaboration with government sector and private sector, it under the management and guidance of our Vice Chancellor, Chancellor, and higher management. We are in CSR activity as a corporate social responsibility. We are giving different kind of social integration programs, different kind of upgradation of the local population, and different kind of trainings to the masses. So in terms of our whole charter of the department, we are working as a capacity building unit of Sir Syed University. And in terms of capacity building, we are not just targeting the students, but we are also targeting the employees of Sir Syed University. In terms of employee development and employees training, we offer different kind of trainings to the office staff, to different kind of security staff, different kinds of trainings provided for the specialization of domain in which the staff is working, like for the lab technicians, for their upgradation, similarly for electricians, for different kind of trades in which they are operating. So for Sir Syed University, it is also working as a capacity building unit in terms of the requirement of HEC and PEC, and fulfilling the gap which is present in the local market, and also giving a bridge between industry and academics to provide a skill set which is in demand of the industry and which are not actually covered, because everything is not possible to be covered within the 4-year time span of a graduation. And obviously some technologies are upcoming, a latest technology, like if I talk about my field of computer engineering, currently quantum computing is coming up, and the quantum computing is not taught till last year. It is just upgraded, and quantum computing also needs a quantum programming. So for that, the programmer and developers are required to work on that. So that such kind of technology, similarly data science, artificial intelligence, and different traits in which continuous development and continuous research is ongoing, and the new frameworks and new tools are evolved with the passage of time, and the skill set or the manpower is required for that, and CEP is actually fulfilling those gaps and provide the trainings which are required of the requirement of the market. So in short and brief, I just give the introduction of my department. Hopefully you have got. Yes, sir. I got the all answers what I want. Sir, kindly briefly explain the program of कामयाब जवान program. जैसे आपने भी इसको highlight किया, तो वो किस तरह चल रहा है आपके batches, और what are the future programs about this? The Kamyab Jawan program is actually initiated last year before pandemic. Dr. Tahir Fattani, who is working in Auric department of Sir Syed University, and also assistant professor and associate professor of software engineering department, he initiated that with the federal government. And at that time, when they inspect the university premises from the Islamabad,
to give the charter to Sir Syed University regarding this program, because it is the first time Sir Syed University operating in collaboration with federal government to give such kind of mass training to the youth of Karachi. And in terms of calibration, we got the charter after inspection, and they inspect the CEP department and take the history of CEP department that we are operating since '97, and we have already 15,000 more students of CEP in plus with the Sir Syed University. This is the add-on of Sir Syed University. Outsiders also join us from different universities in our trainings, so it is open for all. Similarly, they got this. You can say that picture that Sir Syed University is not just catering its own student, but it is also already working for the other youth which is available in the Karachi and in the near vicinity of the university, and they are giving different short courses and trainings. Already we are working in that area. So then NAFTAC team, National Vocational Training Center team, give the charter to Sir Syed University regarding the trainings which are already offered by the Continuing Center of Professional Education, like IoT, industrial automation, and networking, CCNA training, because we are also a Cisco certified academy. So we got those trainings which we are already offering as a under the umbrella of CEP, Sir Syed University. We proposed them to the NAFTAC, and now NAFTAC approved that those trainings for our initiative, and they fund that training as a free of cost training for the masses of the Karachi. And although we got the student from interior, from all over the Pakistan, the students joined that, because some courses which we offered, that is not offered in Pakistan and anywhere else. So in terms of project management professional, first time that NAFTAC offered that program, because CEP already offering that program since 2001 with the AUC technology, Asadullah Chaudhry. And currently this program is also accepted by the NAFTAC to be offered under the umbrella of PM Kamyab Jawan Training Skills for All. So in that selection, PMP is just offered by the Sir Syed University and CEP department. Only that is the one institute which is offering this program. So we got the mass desire to join that program, and almost we got more than 9,000 candidates who want to join this program. But at that time, we have only 100 seats which are available for the PMP certification. So in Kamyab Jawan program, the response from the youth is enormous and huge, and we have the strict selection criteria in which all the students and candidates who have applied in the Kamyab Jawan program gone through the strict interview session and then the final scrutinization under the supervision of the NAFTAC team, who has director from the Islamabad and Sindh region. So we got the merit list, and after that we initiated the first batch. In first batch, we have 500 students and candidates with the 6 different disciplines in which we are offering 6 trainings. Now, in second batch, which is currently ongoing, first batch, Alhamdulillah, is a major success of Sir Syed University in collaboration with the NAFTAC, because we got the huge number of positive responses and the job placements of the students. And similarly, the major you can say that feedback is that NAFTAC, not only in the first batch we got the top seats allocation for the Sir Syed University, in the second batch also we got the top allocation of the seats for the Sir Syed University for Kamyab Jawan program. And in second batch we are also successfully operating, and currently in the pandemic we are going on the online mode, and almost 3 months duration is going to complete in this month. So hopefully that will be completed sooner, within the duration of 6 months during this pandemic, because we have the option of complete online mode of operation as plus the physical mode. All the facilities are available in Sir Syed University. So I welcome all the candidates who want to join Sir Syed University and Kamyab Jawan program on behalf of the Center of Continuing Professional Education.
Okay, sir. So your department have any discount policy for the students? Yes, sure. We have various discount policies. Regarding the current students who are enrolled in Sasiyat University, we offer 25% discount to all the students from any discipline of Sasiyat University. So those students who are currently enrolled got the 25% discount, and those students who have become the alumnus of our Sasiyat University. So all the alumni got 10% discount of Sasiyat University. Additionally, we also offer the group discounts and early bird discounts and all those discounts which are dependent on the subject of course and with the approval of the particular instructor and management. Okay, sir. Sir, kindly tell us about the eligibility of the program. कि कौन से background से आपके program में admission ले सकते हैं? What is the criteria of these things? We have actually different programs with different eligibility criteria because we are not just catering the bachelor's or master's or intermediate. We also provide courses for the even middle class student, 8 pass, 10 pass students can also join. There are different classes or courses which are offered like game development, graphic designing, office automation, and different even in CCNA we got the matriculation certification requirement for the student and some IT background that is encouraged for the student. We also have intermediate clear student like in the Kamyab Jawan program, FA, FSC, and DAE or the higher is required to join the Kamyab Jawan program. So at least you have a intermediate level requirement for Kamyab Jawan. But other programs like simply for the women empowerment, we started without any education. Student can join, and they have joined in SIOP like the initiative for the social integration. So those eligibility criteria are relaxed. But similarly, we have some specialized courses and trainings regarding the particular area of specialization. So we need the prerequisite or the eligibility for the candidates that they must have at least awareness of the prior requirement. Like if I talk about the CCNP, Cisco Certified Network Professional, so that student must have the knowledge of CCNA. That is the requirement of the CCNP. Or similarly, if you go further for CCIE, you need a requirement of CCNP. So that means that if you are targeting any certification, you must have the prior knowledge. So for that, the first step or first beginner level and then intermediate level and then the expert level. So we normally categorize our training also like in terms of data science and artificial intelligence. We divide the batches in 3 different approaches like Alpha, Bravo, Charlie. So Alpha is considered as the beginner level, and Bravo is intermediate level, and Charlie is the expert level. So according to the students' understanding and eligibility, we place him in a particular module. I think hopefully Okay, sir. you got Thank clear. you so much, sir. Yes, sir. I got all these things. सर एंड में कोई शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे? अभी एडमिशंस के सीजन चल रहा है और स्टूडेंट्स आपको जो सुन रहे हैं उनके लिए कुछ? जी बिल्कुल, definitely as a alumni of Sir Syed University, I recommend my university. It is an alma mater for me, and it provides all the facilities to the students as per expectation. And obviously, if there is any shortcoming, the main thing is that what is the time required to remove that shortcoming. In Sir Syed University, the management is dedicated, and they provide the solution of a problem on a fly of time. Like in pandemic, when pandemic arrives, nobody is aware of the online training, online session. So in Sir Syed University, the management decided that we have to go in the online mode, and within a month, those classes are operational. We set up the VLE, virtual learning environment. We got the LMS. We got the MS team-based trainings. All those trainings also catered by the Center of Continuing Professional Education under the guidance of the management, that all the faculties are trained, students are trained, that how to join, how to upgrade their skill set, how to submit the assignments, VLE-based trainings, how to get the particular results or compilation of attendance, all those things. Similarly, on the QOB, that quality of outcome-based education, that is all those things which are adopted by the Sir Syed University in the last 1 or 2 years. You can see the progress, that it is a continuous process of development.
And in the computer engineering in the IT sector, we cannot say that the information is stagnant. Information is continuously growing, and you must adopt it. If you have an adaptive nature and you can adopt the knowledge and accomplish yourself as per mark or as per requirement of the environment, then you will be a successful. And Sir Syed University has the vision to provide you all the facilities to empower you in your future, and whatever your aims of life, you can achieve it. Dependence is that you must be dedicated, you must be devoted, and you must be punctual, you must be regular, and you have to put in your 100% effort to get the achievement. We have the alumni in Microsoft, we have the alumni in Cisco, we have the alumni in all the 500 top ranking companies as a IT professionals. My batch, almost more than 80% of my section students are present in US, UK, and Canada as alumni, and all of them are working in the top ranking companies. So I recommend that the Sir Syed University is not just providing you the quality, it is providing you the career counseling and guidance and linkage with the industry. So Center of Continuing Professional Education is actually targeting and filling those gaps which are present in the academic side, because we have to follow a standard of HEC PEC recommendation, and market is demanding something else. So that gap is filled by the Center of Continuing Professional Education. So I recommend to all the students that they must join Sir Syed University in all the programs, and as well as Center of Continuing Professional Education for upgradation of their skill set. And if they feel that they are not aware of any latest and upcoming any upcoming tool or technique they want to learn, they can join the Sir Syed University CCPE department, and they will get the updated knowledge. Hopefully, we are available here to resolve all the issues, to get your feedback, to get your comment. If you need any kind of training, you can provide us the input, and we will arrange those trainings also as a Center of Continuing Professional Education. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your precious time and the information you gave us. Thank you so much, sir. And my next series of questions is with Syed Ziaul Yaqeen, Deputy Research Registrar of Scholarship in Sir Syed University of Engineering and Technology. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you, Arma? Alhamdulillah, good, sir. आप कैसे हैं? Alhamdulillah. अच्छा जी, thank you very much. आपने basic introduction तो दिया है हमारा. Well, my name is Syed Ziaul, and I'm a Deputy Registrar of Scholarship. I'm looking after a couple of other things as well in the university. Plus, my experience is I've had a couple of experiences in different fields, like banking sector. I was in the telecommunication sector. Then I've worked with different organizations. So I've got a vast experience of different fields. Well, that is a छोटा सा एक part मेरे बारे में. And let's come to the scholarship department. When I joined Sir Syed University, so at that time there were a couple of hiccups going on, and जिसको over the period हम लोगों ने इतना transparent कर दिया कि like इस पर हमारा scholarship department number 1 चल रहा है माशाल्लाह, and a lot of other universities इसमें हम लोग बहुत top performance में आता है हमारा department माशाल्लाह. हम लोग ATC का visit हुआ था हमारे यहाँ, and we were according to them हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस इन entire Sindh region. We were the best performing scholarship department माशाल्लाह, and अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है. यानी आप जो भी अप्लाई करेंगे आपको ये शिकायत हमसे नहीं होगी कि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है. स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है क्या? बेसिकली स्कॉलरशिप टोटली आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती कि आपको हमारे पास से स्कॉलरशिप ना मिले. लेकिन अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हम कुछ कर नहीं सकते. इसका मकसद क्या है आपको ये बताने के लिए कि आपकी मेहनत के ऊपर आपकी स्कॉलरशिप डिपेंड करती है. सो यू नीड टू रियली वर्क हार्ड, एंड आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा आपको फायदा होगा. इस पर मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी खुशखबरी ये देता हूँ कि फर्स्ट टाइम एवर सर सैयद ने इंट्रोड्यूस किया है SSUET ने कि जो हमारे टॉप 50 परफॉर्मर्स होंगे हमारे एडमिशन टेस्ट में, उनको हम लोग मेरिट स्कॉलरशिप देंगे.
इसका ये मतलब होगा कि आप में से जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, जिसने टॉप 50 में जो क्वालिफाई कर गया, उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले ऐसा सही हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ, और ये आप लोग के लिए एक तरह से अच्छी खुशखबरी है कि अगर आप अप्लाई करते हैं और आप लोग परफॉर्म करते हैं और हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो आप लोगों को उसमें भी एक वेवर मिल जाएगा। ओके। दूसरा जो आपका है, इसमें एक और मेन जो न्यूज़ है वो ये है कि पहले सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है, वो सिर्फ इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज को स्कॉलरशिप ऑफर करते थे। लेकिन अब रिसेंटली हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूव कर दिया है कि हम लोग जितनी भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज है या कोर्सेज हैं, मॉर्निंग के हो गए, इवनिंग के हो गए, बीबीए हो गया, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, उन सब में हम लोग आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। यहाँ तक कि आपका जो एमबीए है, एमबीए के लिए जो अप्लाई करता है, उनका अगर कोर्सेज में 3.5 एंड अबव है, तो उनके थीसिस में उनको 50% वेवर मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज न्यूज, जो कि आज मैं इस फोरम पे बैठ के आप लोगों को ब्रेक कर रहा हूँ, जो कि हमारे प्रीवियसली हमारे स्टूडेंट्स इसको यूज नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए। बट आप लोगों के लिए, आप लोग जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। तो मैंने आपको दो मेजर न्यूज़ देखी है। एक तो कि आपके टॉप 50 वाले जो बच्चे हैं परफॉर्मर्स, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, और दूसरा जो हमारे जितने कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, उन सब के लिए आप स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये हो गया आपका छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट। जी अरहमान। हेलो। Okay, sir. Sir, जी, my next question is here with you. Okay, what is the criteria to take a scholarship? अच्छा ठीक है जी। जो हमारा क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। इसमें लोग जो हैं वो ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं, काफ़ी लोग मिस भी कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी अनाउंस स्कॉलरशिप, हम लोग उसको वेबसाइट पे प्लेस कर देते हैं। हमारे फॉर्म्स भी, हमारा क्राइटेरिया भी, सब कुछ वेबसाइट पे, सर सैयद की वेबसाइट पे, जो कि www.shuet.edu.tk है, उसके ऊपर अवेलेबल होता है। आप लोग जैसी स्कॉलरशिप अनाउंस हो, आप वेबसाइट देखते रहें। आप क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे आजकल आ नहीं पा रहे ड्यू टू ऑनलाइन टीचिंग, और डायरेक्ट क्लासेस हो नहीं पा रही। क्लासेस होती हैं तो वो तो हम लोग नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, डिपार्टमेंट फॉर्म कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन चल रहा है तो आप वेबसाइट से इसको देखते रह सकते हैं। हम लोग जब अनाउंस करते हैं स्कॉलरशिप, तो आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म डाउनलोड करके उसको कंप्लीट करके उसको हमें जमा कराते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो लोग थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी मार्कशीट नहीं आई। आपको मार्कशीट की जरूरत नहीं होती अप्लाई करने के लिए। आप सिर्फ जो भी बच्चा हो, अपना फॉर्म ले और भर के जमा कर दे। उसकी प्रीवियस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग उसको जज करते हैं, और हमारे पास रिजल्ट होता आ जाते हैं। तो आप लोगों को रिजल्ट की वरी की जरूरत नहीं है। लोग इस वजह से अप्लाई नहीं करते काफी कि सर हमारे पास मार्कशीट नहीं थी, या जो भी रीजन था, मार्कशीट का हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एक बहुत क्लैरिटी फैक्टर है जो मैं चाहता था कि इस फोरम पे आपको बता दूं। आप लोग सब आराम से अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड करके फॉर्म उसको, और आप हमें जमा करा दें। अब इसमें कैटेगरीज क्या आती है। हमारे यहाँ 5 कैटेगरीज हैं। एक हमारे यहाँ फर्स्ट आइस है, जो कि पोजीशन होल्डर होता है। इसकी पेरेंट्स इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है। इसकी मिनिमम जीपीए 3.75 और अबव होनी चाहिए। इसका अटेंडेंस भी हम लोग एग्जाम करते हैं। इसको हम लोग जो स्कॉलरशिप है वो फ्री शिप दी जाती है। फ्री शिप का मतलब सिर्फ ट्यूशन फी जो है हमारी, वो वेव ऑफ कर दी जाती है। और उनको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, इसमें 35 स्टूडेंट है जिनको हम लोग ये स्कॉलरशिप देते हैं, जो टॉप पोजीशन होल्डर होता है उसको। इसके अंदर आप लोग हमारे पास अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है, तो हम लोग विदाउट एप्लीकेशन इस कैटेगरी को कंटिन्यू कर देते हैं। सेकेंड है हमारी मेरिट स्कॉलरशिप। इसमें पेरेंट्स इनकम को एग्जेप्टेड रखते हैं। फिर हमारी जो मिनिमम जीपीए है वो 3.5 होनी चाहिए स्टूडेंट की। इसमें अटेंडेंस का फैक्टर है। अटेंडेंस आपकी मिनिमम 90% मेंटेन होनी चाहिए। इसमें हम लोग जो स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं वो 45% ऑफ ट्यूशन फी अवार्ड करते हैं। यानी आपकी जो भी ट्यूशन फी होगी उसका 45% आपको रिबेट मिल जाएगा। और ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इसमें एलिजिबल होते हैं, वो अराउंड 180 होते हैं। यानी अप्लाई करने वाले तो 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। बट जो टॉप 180 होंगे इनमें से, वो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। और ये भी ऑटोमेटिक विदाउट एप्लीकेशन होती है। आपको एप्लीकेशन हमें सबमिट करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आप कर भी देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है रेगुलर स्कॉलरशिप फॉर न्यू केसेस, जो पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं या उनको कोई और स्कॉलरशिप नहीं लगी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पेरेंट्स इनकम
को कंसिडर किया जाता है। यानी सालाना उनके पेरेंट्स की इनकम 450,000 के अंदर होनी चाहिए या 450,000 होनी चाहिए। 450,000 से कुछ भी ऊपर होगी आपका क्राइटेरिया में अगर आप नहीं उतरेंगे तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें आपकी मिनिमम जीपीए 3.25 होनी चाहिए, 85% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए एंड 40% ऑफ ट्यूशन फीस में हम लोग ऑफर करते हैं, जो कि फर्स्ट जो टॉप के 180 स्टूडेंट्स हैं उनको हम देंगे। इसमें आप लोगों को अप्लाई करना जरूरी है। इसमें जो भी टॉप 180 परफॉर्मेंस होंगे उनको हम ले लेंगे, उनको हम लोग स्कॉलरशिप ऑफर कर देंगे। फिर है तो हमारे पास 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का क्राइटेरिया। वो क्या है, उसके अंदर 2 भाई बहन या 2 भाई या 2 बहनें अगर हमारे पास पढ़ रही हो, उनमें से किसी भी एक को हम लोग स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं परफॉर्मेंस बेस पे। अगर एक भाई इसमें फेल हो जाए या बहन फेल हो जाए तो ये ब्रदर सिस्टर्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते, वो फिर रेगुलर क्राइटेरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास। इसके अंदर क्या है, ब्रदर सिस्टर के लिए पेरेंट्स लिमिटेड रखते हैं, होनी चाहिए। 40% ऑफ ट्यूशन फीस में ऑफर करते हैं और ये हम लोग टोटल 10 बच्चों को ऑफर करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा भाई बहन का इतना होता नहीं है, उसमें से 10 हम लोग लेते हैं केसेस, उनको ऑफर करते हैं। लेकिन ये भी आपको एप्लीकेशन पे बेस्ड होगा। दूसरी चीज, आप दोनों में से जो भी भाई बहन है उसमें से जो टॉप परफॉर्मर होगा उसको हम देंगे ये स्कॉलरशिप। फिर है हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर, ये जो लास्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर नीडी स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम लोग पेरेंट्स इनकम होनी चाहिए 300,000, यानी सालाना उनके माँ बाप की इनकम है 300,000 या उनके भाई बहन की है, जो भी उनका सपोर्ट का मीडियम है 300,000 से अंदर होना चाहिए। इसमें मिनिमम जीपे 3 होनी चाहिए, 85% अटेंडेंस उनको मेंटेन रखनी होगी, 40% ऑफ ट्यूशन फीस को हम लोग ऑफर करेंगे जो रिबेट मिलेगा इनको, और 30 स्टूडेंट्स को हम लोग ये देते हैं। ये भी एप्लीकेशन पे होता है, एप्लीकेशन बेस है, आपको अप्लाई करना जरूरी है। अच्छा, इसमें मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ, अगर किसी भी कैटेगरी में कि जैसे हमारे 3 मेजर सेक्शन होते हैं, एक हमारी जीपे का सेक्शन होता है, पेरेंट्स इनकम होता है और अटेंडेंस होती है। इन तीनों में से किसी भी एक में अगर आप फॉल नहीं कहीं पे आप फॉल नहीं कर रहे या आपका कोई भी आगे पीछे हो रहा है, क्राइटेरिया हम आपसे मैच नहीं कर रहा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर ही आप उतरें, जीपीए और अटेंडेंस जरूर मेंटेन रखें। उससे आपका भी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपको भी आगे बहुत फायदा होगा। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, आपके फ्यूचर सिक्योर होंगे, उतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा। ये बेसिकली हमारा क्राइटेरिया है और ये हमारी कैटेगरी है। ओके सर। सर काइंडली बताते हैं सर, कौन सा सेमेस्टर के अंदर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए? अच्छा, एक तो मैंने आपको जो न्यू स्टूडेंट्स है उनका बता दिया कि टॉप 50 जो है उनको तो हम लोग जो टॉप 50 परफॉर्मर होंगे उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन जो हमारे बच्चे जो प्रॉपर्ली अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं वो सेकंड सेमेस्टर की बेस पे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड सेमेस्टर से लेके वो अपने 7th सेमेस्टर तक अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड 8th सेमेस्टर के लोग एलिजिबल नहीं होते, या आर्किटेक्चर के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए 10th सेमेस्टर के लिए नहीं होती। आप इसमें ओके सर, आराम से जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। जी सर आपके जो डिपार्टमेंट की वर्किंग चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों की वर्किंग है, आप लोगों की फैकल्टी जो काम वगैरह आप लोगों के डिपार्टमेंट्स के चल रहे हैं अच्छा, सारे? हमारा जो वर्किंग है वो बेसिकली वो ये होता है कि बच्चा हम लोग अनाउंस करते हैं स्कॉलरशिप। अच्छा, इसमें एक अनाउंसमेंट में आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारी डेडलाइन होती है, मेक श्योर कि आप उस डेडलाइन के अंदर लेके फॉर्म और उसको जमा करा दें, क्योंकि डेडलाइन के बाद हम लोग इंटरटेन नहीं करते फॉर्म। हम लोग बहुत इसमें क्लैरिटी इसलिए रख रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में इश्यूज ना हो। तो बेहतर है कि आप लोग वेबसाइट देखते रहें या अनाउंसमेंट जो हम कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहें, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो। इसमें हम लोग की क्या होता है ये वर्किंग के, बच्चा हमें डॉक्यूमेंट जमा कराता है, हमारी टीम जो है वो उसको चेक करती है, फिर उसके ऊपर हमारे इंटरनल ऑडिट लगते हैं, वो चेक करते हैं, फिर मैं उसको चेक करता हूँ, फाइनलाइज करता हूँ। फिर हम लोग इसको चेक करने के बाद हम लोग इसको एक स्कॉलरशिप कमेटी के आगे प्रेजेंट करते हैं, जिसका मैं खुद भी मेंबर हूँ, और वहाँ पे हम लोग इसको वापस फाइनलाइज करते हैं केसेस। उनके अप्रूवल्स के बाद ये जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए वाइस चांसलर साहब के पास। तो वाइस चांसलर साहब उसको अप्रूव कर देते हैं, तो वो जाता है डायरेक्टर फाइनेंस के पास, जो आपके अकाउंट्स में आपकी अमाउंट को नेक्स्ट सेमेस्टर में उतार देते हैं। तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कुछ फीस का इशू हो रहा है या वो हो रहा है, आपने अगर किसी सेमेस्टर की फीस पे भी कर दी है तो आपको जो स्कॉलरशिप लगेगी वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट कर दी जाती है। तो हमारा बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस है।
इसमें इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि आपको किसी भी किस्म का हिकअप ना हो और आपको किसी भी किस्म का आपके साथ ज्यादती ना हो। यानी जो एलिजिबल है और जिसका बनता है उसको जरूर मिलेगा। ओके सर। सर आप कोई शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी हैं प्रेजेंट और जो अब आ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स? शॉर्ट मैसेज मेरा यही होगा न्यू कमर्स के लिए कि देखिए जी, टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है SSUET सर सैयद यूनिवर्सिटी। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हमेशा उस जगह पे जाएं जो मार्केट में जिसका नाम हो। हमारी बेस्ट फैकल्टी है, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमारे हर डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा आउटकम है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने आके देखिए मेहनत करें, फल आपको अल्लाह ताला देगा। सिंपल सी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त मार्केट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नंबर 1 है। तो अब इससे आगे मैं आपको कोई अच्छा मैसेज दे नहीं सकता। आप खुद समझदार लोग हैं, आप लोग बड़े हो चुके हैं, इतनी आपको समझ है कि आपको क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना। और आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। हमारे पास ग्राउंड हैं। आप आए, आप खेले कूदें, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को फोकस करते हैं। आपको पढ़ाई में नंबर 1 होना है। जो कि जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका फायदा होगा। ठीक है Okay. जी। Thank you so much, sir, for the information and everything. Thank you so much, sir. या Thank you so much, sir, and thank you for being a part of the virtual information session for admission 2021 are open. For further queries, you can visit our admission office where our student council and faculty representative who can guide you better during the whole process. You can also contact us on a number and an email running down the window. You are also available on Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn. You may join our official social media platform for update information. So visit our detailed website for academic program, fee structure, scholarship detail, and other information. Thank you for joining us. Stay safe. Good luck. Thank you.